Hello everyone. Hi Bacho, how are you guys? Welcome to the session. Welcome to the series of 500 quant questions. In this series, we are going to cover almost all the topics of quantitative aptitude. And with 500 best quant questions, we will be doing the complete syllabus of quant. Today, again in episode number 3, I will be picking the topic of number system and we will be covering questions, some advanced level questions which involves the concept of perfect squares, guys. It's a beautiful concept. I have seen questions in the previous year CAT paper based on perfect squares. So we'll be taking 5 best questions of perfect squares, right? Moderate to advanced level of difficulty questions on this topic, and we'll try to cover this concept through these questions, guys, right? Am I audible to all of you? Everything is fine? Is the audio, video all good? Good evening, guys. Good evening. A very good evening to all of you. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? Good evening. Hi Sayed. How are you? Okay, बच्चों. So guys, let's do the questions on perfect squares. I'm sure everybody know what is the meaning of the word perfect square, guys. Perfect squares क्या होते हैं? Right, in number system, what are the numbers? What are those type of number which are called as perfect square, guys? Perfect squares क्या हैं बच्चों? जिनका factorization करने पे prime numbers की power even होनी चाहिए. Those numbers are called as perfect square, guys, right? So if I factorize a number, right, once I write down the factorization form of the number on the factorization part, right, once I have factorized a number, prime numbers power should be even. If I write down the number n as 2 power 4, 3 power 2 into 5 power 1. Is this number a perfect square, guys? Tell me. Will you call this number a perfect square? Will you call this number a perfect square? No, this number is not a perfect square, guys, right? If I write down a number n as 2 power 6 multiplied by 3 power 4 multiplied by 5 power 2. Will you call this a number perfect square? Yes. Why? Because all the prime numbers are having an even power. This is a perfect square, right? Why I'm calling it a perfect square? Because if I take the square root of this number, I will be getting an integral values. All the powers are the multiple of 2. So that's why this number is called as a perfect square. So this is 2 power 3 multiplied by 3 power 2 multiplied by 3 power 1. This is a perfect square. Yes, we will be calling this number a perfect square, guys. Yes or no? So now, what are the type of questions that can be made जिस पे perfect square की definitions किसी तरह से use हो सकती हो, या फिर another concepts जो perfect square से किसी न किसी तरह से related है. Let's have a look at this question, guys. This is an amazing and beautiful questions. I have not given you the options intentionally because then you can cross verify it with the help of the options. Tell me, guys, find the minimum value that should be added to the product of this so that it becomes a perfect square. That means if I take the product of all these numbers, 161 into 163 into 165 into 167, it says what should I add to this number? इस number में क्या add करना चाहिए कि ये number एक perfect square बन जाए बच्चों, right? What should I add to this number? Would you like to give me the answer to the question, guys? किसी बच्चे को आंसर करना है इस question को? बोलो, go for it. Come on, guys, go for it. Try this. क्या बनेगा बच्चों, बताओ? What will be the answer? Anybody? Five square is a wrong answer, RK. Do you know the concept? 5 square is a wrong answer, बच्चे. See that? बहुत ही amazing और beautiful question है बच्चों, right? See this. This is थोड़ा algebra का concept इसमें use करना पड़ेगा बच्चों. Do you know this or should I start discussing the question, guys? Thank you, Saeed. Thank you. I hope your preparation is going fine. You just started attending the sessions, right? Do let me know if you're facing any issue, Saeed. Okay, you can talk to me anytime.
चलो बच्चों, let's have a discussion on this, guys. Let's have a discussion on this, guys. Find the minimum value that should be added to the product of these two numbers so that it becomes a perfect square, right? Anybody want to comment the answer? किसी बच्चे को आंसर कमेंट करना है? देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको? Can you see that all these four numbers are consecutive odd numbers? Can you see this? Guys, ये चारों के चारों numbers क्या है? These are the consecutive odd numbers, right? Whenever you take the product of four consecutive odd numbers, वो कोई भी हो, चाहे वो 161, 163, 165 into 167 हो, या फिर कोई और product हो, right? If you are taking the product of four consecutive odd number, guys, तो ये जो rule मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी rule सभी odd numbers के लिए चलेगा. The only condition you need to know, need to follow is कि consecutive four odd number होने चाहिए. But if I take my first odd number as x, then the next odd number will be x plus 2. Am I right? Next odd number would be x plus 4, and the next odd number would be x plus 6. Am I right? Are you guys with me? Is it clear, everyone? Yes or no? Yes or no, guys? कोई भी odd numbers, right? X. Let's assume that 161 is x. This number is x plus 2. This number is x plus 4. This number is x plus 6, right? Now you see this. Now you see this, guys. If I multiply this bracket with this bracket, I will be getting x square plus 6x, right? And if I multiply this bracket with this bracket, again I'll be getting x square plus 2x plus 4x, that is plus 6x plus 8. Am I right? Yes or no? Are you guys with me? Okay, why I am multiplying this bracket with this bracket? Why I'm not multiplying this bracket with this bracket? इस ब्रैकेट को इसी ब्रैकेट से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? द रीजन इज इफ आई मल्टीप्लाई x विद x प्लस 6, आई विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस 6x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी पहली टू टर्म्स x स्क्वायर प्लस 6x आ रही है. सो पहली टू टर्म्स कांस्टेंट रखने के लिए, सेम रखने के लिए मुझे x को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करना है. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? व्हाई? बिकॉज नाउ आई कैन अज्यूम x स्क्वायर प्लस 6x एज अ वैल्यू विच इज इक्वल टू t. क्या मैं x स्क्वायर प्लस 6x को, राइट, कैन आई अज्यूम x स्क्वायर प्लस 6x एज अ वैल्यू इक्वल टू t? इसको मैंने t पुट कर दिया. Now this is t into t plus 8, guys, right? This is t into t plus 8. Now guys, you will now be getting another quadratic equation which is 8 square plus 8 times of t. Yes or no? Now tell me, guys, 8 square plus 8 times of t. If I want to make it a perfect square, if I want to make this value a perfect square, किसी भी quadratic equation में, राइट, अगर कोई भी टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में आपको दिया हुआ है, यू वांट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. हाउ डू यू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यू टेक द कोफिशिएंट ऑफ टी. टी के कोफिशिएंट का हाफ करो, एंड उस वैल्यू को हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ले लो. दैट मीन्स इफ आई वांट दिस नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, आई नीड अ वैल्यू ऑफ 16. आई नीड टू ऐड 16 टू दिस वैल्यू. व्हाई? Because if I add 16 to this value, now this will become a perfect square and this will now be written as t plus 4 का whole square. Yes or no? समझ में आया? अगर मैं, राइट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, t के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर आपको ऐड करना, राइट? रीजन बीइंग, आई वांट टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab. मुझे इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab में कन्वर्ट करना है, राइट? नाउ इफ आई वांट टू कीप b एज इट इज, तो मेरे को 2a की वैल्यू को 8 के इक्विवेलेंट रखना है. 2a 8, तो a हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16. दैट्स द रीजन यू आर एडिंग 16 टू दिस वैल्यू. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आई नीड टू add 16 to this. हमेशा, कभी भी, जब भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे होगी, t के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करना है, उसका एडिशन करो, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. दैट मींस इस नंबर में, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive odd number, 161 into 163 into 165 into 167, if I add 16 to this value, this number will become a perfect square, guys. Everybody clear with this, right? In fact, कोई भी numbers आप ले सकते हो, कोई भी odd numbers आप ले सकते हो. Let me give you an example here. Let me give you an example, guys, right? You take any other 4 consecutive, just to prove, take some small number, guys, right? If I take the number as
7 into 9 into 11 into 13. If I ask you this question, what should I add to the product of this number so that it becomes a perfect square? इनके प्रोडक्ट में क्या वैल्यू ऐड करनी चाहिए so that it becomes a perfect square, guys? Tell me. Odd number के केस में आंसर यही आएगा. आप देखो, if I add 16 to this will become a perfect square. Can you please tell me with a calculator 7 into 9 into 11 into 13 कितना होता है? Guys, can you please tell me the calculation part of this number? What is 7 into 9 into 11 into 13? What is 7 into? Tell me, guys. 7 into 9 into 11 into 13 का प्रोडक्ट कितना बनता है? What is the product of this? Can you please comment? 9009 ना? So RK, if this is 9009 plus 16, तो ये बनेगा 9025. Now tell me, guys, क्या 9025 एक perfect square है? Yes. Why? Because ये 95 का square है. Got it? So 4 consecutive odd numbers को perfect square add बनाना है तो हमेशा 16 add होगा. ये एक important theorem है बच्चों. इस पे direct question आपको CAT में आ सकता है और CAT ने I guess इसी concept पे previous year paper में एक ऐसा question पूछा हुआ है. That's the reason I am coming up with this question here and you should know this. Everybody clear with this? As it is direct ऐसा कोई question नहीं पूछा था, but किसी question में इस तरह का concept use हो रहा था जिसमें बच्चे को ये पता होना चाहिए that if I'm taking the product of 4 consecutive odd numbers, then I need to add 16 to that value to make it a perfect square. Okay? Everybody clear? Done? Thank you, sir. बच्चों समझ में आ गया? Is this point clear to you? Let's do some more question, guys. थोड़े से और questions करेंगे बढ़िया perfect square के concepts के ऊपर. Let's look at the question number 12 here. N is a natural number obtained by adding 16 to the product of 4 consecutive even natural number. Which of the following statements are always true? Come on, guys. Take a minute to answer the question, guys. Take a minute to answer the question. ये ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बच्चों? 1 and 2, 2 and 4, 2 and 3 या फिर सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? व्हाट इज द आंसर द क्वेश्चन, गाइस? कम ऑन, टेल मी. And is a natural number obtained by adding 16 to the product of 4 consecutive even natural number. Which of the following statements are always true? बोलो बच्चों, कमेंट करो. N is a natural number. N is a natural number obtained by adding 16 to the product of 4 consecutive even natural number. बच्चों, पहला even number है ना, तो first even number को अगर मैं 2x लूंगा तो second even number जो बनेगा that will be equal to what? Product of 4 consecutive even natural number लेना है बच्चों, right? So can I say the number N is 16 plus 2x multiplied by 2x plus 2. Why 2x plus 2? Because they are the consecutive even natural number, guys. The next would be 2x plus 4. Next would be 2x plus 6. Everybody clear with this? Tell me, guys, what is going to be the answer to the question? B option. That's correct answer, Jayashri. That's perfectly fine. Right? So, guys, you see that this is 16 plus. Can I take 2 from all these 4 values? Right? अगर इन सभी नंबर्स में से 2 कॉमन लिया, so I'll be getting x into 2 यहां से कॉमन आया, इसी ब्रैकेट से भी 2 कॉमन आएगा, इस ब्रैकेट से भी 2, इस ब्रैकेट से भी 2, सभी ब्रैकेट्स में से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 का पावर 4 बनेगा. एंड I'll be having x into x plus 1, x plus 2 and x plus 3. Now these are the 4 consecutive numbers. X plus 1, x plus 2, x plus 3 are the 4 consecutive numbers. Yes or no? Now this is 16 plus 16 into x into x plus 1 into x plus 2 into x plus 3. Right? Right, everybody? Now I just need to see that is it a perfect, क्या ये number 32 से divisible है? Is this number a number which is divisible by 32? See that the maximum value that I can take common from this is 1. Yes or no?
इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 16 कॉमन आ सकता है. सो आई विल बी हैविंग दिस नंबर एज x into x plus 1 into x plus 2 x plus 3, राइट. सो टेल मी गाइज, क्या ये नंबर 32 से डिविजिबल होगा क्या? विल दिस नंबर बी डिविजिबल बाय 32? क्या ये नंबर 32 से डिविजिबल है? सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर 16 तो कॉमन ले लिया, व्हाट इफ द वैल्यू इन दिस होल ब्रैकेट इज एन इवन नंबर? अगर ये पूरी ब्रैकेट इवन होती है तो 2 कॉमन आ जाएगा. इन दैट केस द नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 32. बट टेल मी गाइज, क्या ये नंबर इवन हो सकता है? टेल मी, द होल थिंग, दिस होल थिंग व्हिच इज इनसाइड द ब्रैकेट, कैन दिस बी एन इवन नंबर? टेल मी. This cannot be an even number. Why? Because this is a product of 4 consecutive numbers, and 4 consecutive numbers आप कभी भी पिक करोगे तो कल हमने डिस्कस किया था, every time you pick 4 consecutive numbers, one number will be the multiple of 2 and one number will be the multiple of 4. So can I say this product is definitely going to be an even number? ये प्रोडक्ट इवन नंबर आएगा. और इस इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो दिस होल ब्रैकेट विल रिजल्ट इनटू एन ऑड नंबर. तो ये नंबर अंदर ऑड है, ये इवन नहीं है. सो ये नंबर 32 का मल्टीपल नहीं हो सकता. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 32. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 16? यस, द होल नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 16 बिकॉज आपने 16 पूरे ब्रैकेट से बाहर कॉमन लिया हुआ. नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 16. इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 64? नहीं. द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू of even number that can divide it is 16, which we have already taken outside of the bracket. So this number is definitely not 64, divisible by 64. The last point that I need to check now, this is something which is very important. Is this number a perfect square? क्या ये number एक perfect square है क्या? Yes, ये number एक perfect square है. पिछले previous question में भी हमने इसको prove किया है, right? 4 consecutive even numbers या odd numbers में अगर आप 16 add करोगे तो वो resultant value जो बनेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगी. फिर से प्रूव कर लेते हैं. इस केस में भी अगर आपको प्रूव करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. 16 itself is a perfect square, राइट? ये हमने देख लिया. चलो इसको एक बार नए तरीके से करते हैं. दिस इज 1. ये देखो, अभी देखो, नाउ इफ आई टेल मी गाइस, किन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे? अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली 2 टर्म्स को सेम रखना है तो सी दैट आपको ये ब्रैकेट को x+3 से मल्टीप्लाई करना है. x को x+3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग x² + 3x. यस और नो? And if I multiply this bracket with this bracket, this I'll be getting x² + 3x + 2. Yes or no? Right. Now you see that x² + 3x, x² + 3x की value is t, and this now is t + 2. Everybody clear with this? Yes or no? ये point समझ में आ रहा है सबको? And now you see that this is 16 bracket 1 plus t² + 2t. Now what is it? t² + 2t + 1 is a perfect square. Now this is 16 into t + 1 का whole square. 16 भी एक perfect square है. t + 1 की power 2. This is also a perfect square. That means the whole expression will definitely result into a perfect square. So ये fourth वाला statement is also true. That means second and option number 4 is definitely true. Answer would be B option, guys. Yes or no? B option would be the correct answer of the question. Are you guys with me? क्या ये point आप सबको समझ में आया? Is it clear? Done? Good to go? Easy? Now let's take a next question, guys. Question number 13 करते हैं. Do this question, guys. Perfect square is important for CAT. You can see this question. This question that you're seeing on the screen right now is actually based on the previous year CAT paper question, and that's the reason I'm taking this question here, right? If AA is a 4-digit number and also a perfect square, what is the value of A plus B? Come on guys, tell me, what is the answer of the question? AA is a perfect square, is a 4-digit number and it's also a perfect square. What is the value of A plus B, guys? A plus B का value आपको find out करना है. बोलो, anybody? Look at this number carefully, guys. First of all, it is given to you that it's a perfect square. AA is a perfect square. इसके first 2 digits भी equal है, last के 2 digits भी equal है. Your job is to find out that number, right? Find out a 4-digit number which is a perfect square with the first 2 digit and the last 2 digits are equal. And this number has to be a perfect square. Apply the definition of the perfect square here. यहाँ पे perfect square का definition आपको apply करना है. You are supposed to find out
द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एवरीबडी, a प्लस बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट। काफी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्रैम करते हैं, राइट, रट्टा मार रखा होता है कि एक ही ऐसा नंबर है, राइट, 4 डिजिट का ऐसा एक ही नंबर होता है जिसके फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट इक्वल होते हैं, बट इसके अंदर बहुत अच्छी लर्निंग्स है अगर आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली करते हो, राइट। इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंसेप्चुअली, there's so many learnings guys, right। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी लर्निंग्स है। what are those learnings? See this, if it is a 4 digit number guys, अगर ये 4 digit का नंबर है, so can I write it down this number as 1000 of a? Decimal system में I will be writing down this number as 1000a plus 100a plus 10b plus b. Why? Because in a decimal system, right, every number that you're writing down starting from the unit digit, when you move towards the left hand side, every digit is a successive multiple of 10। पहला नंबर 10 की पावर 0 के मल्टीपल में, सेकंड 10th प्लेस का डिजिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये 10 की पावर 1 के मल्टीपल्स में लिखा होता है। थर्ड वाला 100 प्लेस डिजिट होता है, सो दैट्स अ 100a। फोर्थ वाला 1000 प्लेस पे होता है, दैट्स अ 1000a, राइट। इट्स वेरी सिंपल टू नो। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव द नंबर 1 2 3 4, कैन आई राइट डाउन दिस नंबर एज 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4? यस, आई कैन राइट इट डाउन। 1000 is 10 power 3, 200 is 2 into 10 power 2, 30 is 3 into 10 power 1 plus 4 is 10 power 0, right? So this is how you write down any number in a decimal system. Decimal system में आप इस तरह से number को लिखते हो। Now it's given to you that this number is a perfect square। अगर ये number perfect square है बच्चों, this is 1100a plus 11b, yes or no? Can I take 11 common from this? This number would now be 100a plus b, right? All you need to know now is that this number is going to be a perfect square. Now apply the definition of a perfect square guys. If I want this number to be a perfect square, अगर मुझे ये number perfect square चाहिए तो इसके factorization में prime numbers की power even होनी चाहिए। We have just discussed it when I started this session कि परफेक्ट स्क्वेयर्स वही होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन करने पे प्राइम नंबर का पावर इवन हो। तो यू कैन सी दैट 11 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर फॉर श्योर। ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है। अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर 11 की पावर 2 का भी डेफिनेटली मल्टीपल होगा। अगर ये 11 की पावर 2 का मल्टीपल है विच इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। व्हाई, क्यों 11 की पावर 2 का मल्टीपल होगा? बिकॉज कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा उस प्राइम नंबर की पावर ऑड नहीं हो सकती है, बिकॉज आई वांट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पावर को इवन रखना पड़ेगा। यू नीड टू कीप द पावर इवन सो दैट इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। So once I know that this number is a multiple of 11, then it cannot be multiple of 11 power 1 only. It has to be the multiple of 11 power 2. Why? Because it's a perfect square. So now 11 की पावर 2 का मल्टीपल है एंड सेकंड प्राइम नंबर की जो भी पावर होगी, जो सेकंड प्राइम नंबर जो भी होगा उसकी पावर को भी आपको इवन लेना पड़ेगा। यू कैनॉट टेक दैट नंबर एज विद एन ऑड पावर। तो अगर और भी कोई प्राइम नंबर होगा तो उसकी भी पावर को इवन लेना पड़ेगा, राइट। बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग टू प्राइम नंबर। यू कैनॉट से कि P1 की पावर 2 इंटू P2 की पावर 2 होगा। क्यों? बिकॉज 11 का स्क्वायर 121 है। I want to keep this number as a 4 digit number. So अगर मैंने इस नंबर को greater than 100 से मल्टीप्लाई किया, so this number will finally become a 5 digit. अगर मैं सबसे छोटे दो परफेक्ट स्क्वायर या 3 पर if you take some least perfect square here, 2 square and 3 का square करोगे तो 36 बनेगा। You will see that this number will not satisfy this property. 2 square 5 square करोगे, इसका 2 स्क्वायर लिया और इसका 5 स्क्वायर लिया, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करते ही नंबर 5 डिजिट में हो जाएगा, राइट। आई वांट टू कीप दिस एज अ 4 डिजिट नंबर, सो आई विल गेट टू नो दैट कि ये एक ही प्राइम नंबर इसमें हो आएगा और उस प्राइम नंबर की पावर 2 आएगी। अब वो प्राइम नंबर की पावर 2 कैसे आएगी? देखो, ये तो हो नहीं सकता है, 100 से बड़ा तो ले नहीं सकते आप। सो 121 मल्टीप्लाइड बाय अ प्राइम नंबर की पावर इवन, तो सबसे छोटा हो सकता है 2 का पावर 2। 121 नेक्स्ट नंबर हो सकता है 3 का पावर 2। नेक्स्ट हो सकता है अगला नंबर जो हो सकता है दैट इज 4 का पावर 2, है ना, राइट। 121 इंटू 5 का पावर 2, राइट। जो भी नंबर आएगा दैट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स इट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। 120 इंटू 7 का पावर 2, राइट। 121 इंटू 8 का पावर 2। 9 तक ही जाना है बिकॉज 10 पे तो नहीं जा सकते, नंबर 5 डिजिट में हो जाएगा। Now you just need to multiply it and see that कि इसमें कहां पे आपको 4 डिजिट का नंबर ऐसा मिल रहा है
राइट, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट्स इक्वल होंगे बच्चों। लास्ट के 2 डिजिट्स किस में इक्वल आएंगे? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं आपको। चल मेगा इस किस केस में आएगा? यू जस्ट नीड टू क्रॉस चेक इट, राइट? मल्टीप्लीकेशन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। यू फाइनली सी दैट 121 into 8 का ना, यस और नो? गॉट इट? 8 के स्क्वायर पे यू विल बी गेटिंग अ नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई 7744। दिस इज द ओनली नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर गाइस, राइट? जिसके पहले 2 डिजिट्स भी सेम है और आखिरी 2 डिजिट भी सेम है। बाकी सारे नंबर्स लिखोगे तो सी दैट क्लास के 2 डिजिट किसी में सेम नहीं आ रहे। दैट मीन्स ए का वैल्यू इज 7 हियर एंड बी का वैल्यू इज 4। तो आपसे a प्लस बी पूछा था, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 11, राइट? आंसर वुड बी 11 गाइस, ओके? ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग? 100a plus b is divisible by 11। हाँ, 100a plus b को 11 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, बिकॉज ये पूरे नंबर में 11 की पावर 2 आनी है। यस, गॉट इट, राइट? वो भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, बट सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 11 कॉमन फ्रॉम दिस। आई नो दैट कि इसमें 11 का पावर 2 आएगा, 11 की पावर 1 है, दैट मीन्स ये नंबर 11 का डेफिनेटली मल्टीपल आएगा। और 11 की पावर बाहर निकालने के बाद जो नंबर बचेगा वो भी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होगा, या किसी 1 से लेके 9 तक के किसी नंबर का डेफिनेटली स्क्वायर होगा, नॉट प्राइम नंबर। 1 से लेके 9 तक के किसी नंबर का स्क्वायर ही होगा डेफिनेटली, राइट? एंड वी हैव सीन दैट कि ऐसा नंबर 121 into 8 की पावर 2 में बन रहा है। गॉट इट? सो दैट नंबर इज 7744, a plus b 7 plus 4 11। दिस इज एन एक्चुअल कैट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन गाइस। ये कैट का ओरिजिनल क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब कैट में आया था तो ऐसा पूछा था, हाउ मेनी सच 4 digit नंबर एग्जिस्ट इन विच फर्स्ट 2 digit एंड लास्ट 2 digits आर इक्वल एंड नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक ही ऐसा नंबर है 7744। तो क्वेश्चन का आंसर 1 था। आई हैव चेंज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन कि a plus b बताओ, बट क्वेश्चन वही है, राइट? थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन हियर गाइस। नाउ दिस इज आल्सो एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू ट्राई? गिव इट अ ट्राई गाइस। Once you have tried question number 13, exactly on the same line you have this question number 14 here. A 4-digit perfect square ABCD is given such that DCBA is also a 4-digit perfect square. मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका उल्टा करने पे जो नंबर बन रहा है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड ऑल्सो कि इसको डिजिट्स को रिवर्स करने पे जो नंबर बन रहा है वो इस 4 डिजिट के नंबर का फैक्टर भी बन रहा है। तो a plus b plus c plus d की वैल्यू क्या होगी? कम ऑन गाइस, गो फॉर इट, गिव मी द आंसर द क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा? गिव इट अ ट्राई, ट्राई करो। व्हाट इज दैट नंबर शो? नंबर क्या बनाया आपने? You just applied hidden trial? Nine का multiple reason. Explain me the reason why it's a multiple of 9. ठीक है,
it's a good thing that if the number strikes you with a hidden trial, but बहुत अच्छी बात है. But 9 का multiple क्यों लिया आपने? Why are you taking this number as a multiple of 9? What's the reason behind it? Last question से आया. देखो इसका मेन जो लॉजिक है ना, व्हाट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक एट इट. देखो आपने एक नंबर बनाया ए बी सी डी, यू कैन सी इसमें तो सारे डिजिट्स डिफरेंट. ए बी सी डी इज एट 4 डिजिट नंबर, तो ये नंबर बनेगा 1000 A plus 100 B plus 10 C plus D. I'm sure everybody is clear with this. Now you reverse the digits of this number. The resultant number will now be 1000 B plus, sorry, DCBA बनेगा ना, right? When you reverse the digits of this number, the resultant value will be DCBA, right? It would be DCBA. Okay. DCBA. Now the decimal system, you'll write it down as 1000 times of D plus 100C plus 10 times of B plus C. Yes or no? Is this clear to you? Right? Now see that guys, if I add these two numbers, अगर मैं इन दोनों numbers को add करता हूँ, the resultant value will be 1001 into A plus 100B plus 10B. D plus 1000D is 1001D. Am I right? Plus 100B plus 10B is 110B plus 110C. Everybody clear with this? This whole number can be written as 1001 into A plus D plus 110 into B plus C. Everybody clear with this? Now, do you see that this number ये दोनों number का addition करने पे जो resultant value बन रहा है, that number when divided by 11 will give you a remainder of 0. Yes or no? ये दोनों numbers देखो ध्यान से बच्चों, ये 11 के multiple आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? Will this number be a multiple of 11? Yes, right? क्यों? क्योंकि 1001 भी 11 से divisible है और 110 भी 11 से divisible है. Can you say this? Right? The addition of these two values, right, is a multiple of 11. ठीक है? तो can I say the numbers individually are also going to be the multiple of 11? Am I right? Is it clear? Now, can I say that ABCD as a number is definitely a multiple of 11? 11 का definitely multiple बनेगा ये, right? If this number is, and secondly, number को reverse करने पे जो number बन रहा है DCBA, that will also be the multiple of 11. दोनों numbers individually 11 के multiples बनने वाले हैं. And because it is given to you that, this number is a perfect square. Because this number is given to you that this number is a perfect square, तो can I say कि ये number 11 की power 2 का ही multiple बनेगा? Am I right? क्योंकि इसमें भी 11 की power 2 ही आएगी. Exactly same line पे ही question है जो हमने previous question number 13 किया. So 121. अब because perfect square है तो साथ में जो number आना चाहिए 4 digit का है वो भी एक perfect square ही होगा. तो यहाँ पे 2 का square तो नहीं ले सकते because I want this a 3 digit number. तो 3 का square ले सकता हूँ मैं यहाँ पे. Then again similarly यहाँ पे 4 का square भी ले सकता हूँ. 121 into 5 का square भी ले सकता हूँ. 121 into 6 का square भी ले सकता हूँ. 121 into 7 का square भी ले सकता हूँ. Then again I can also take the number as 121 into 8 का square. 121 into 9 का square. Yes or no? Everybody clear with this? Right, 9 के square तक जा सकते हो. अब इन दो वैल्यूज में से मेरे को वो दो नंबर्स निकालने हैं जिसके डिजिट एक दूसरे के रिवर्स हो, राइट? तो यू विल सी दैट अभी सारे वैल्यूज लिखने के बाद यू विल सी दैट कि दो ही केसेस में ऐसा नंबर बन रहा है जिसके डिजिट एक दूसरे के रिवर्स है. दिस इज 1089, राइट? और 121 into 9 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर एज 9801. दीज आर द ओनली टू पॉसिबल नंबर्स जिसके डिजिट्स एक दूसरे के रिवर्स है. और
191 into 9 square as a number is also divisible by this. क्या 121 into 3 का स्क्वायर इसका फैक्टर है क्या? यस, ये इसका फैक्टर भी है कि नहीं? 9 पे डिवाइड भी करेगा. So you get to know that the 4-digit number ABCD will definitely be 9801 और उसको रिवर्स करने पे जो नंबर बन रहा है DCBA that would be 1089 and this number is also a factor of this number. तो A plus B plus C plus D आपसे पूछा था, आंसर वुड बी 18. एग्जैक्टली सेम लाइन पे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया था. गॉट इट? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? और इसमें भी आपको यही सारे स्क्वायर्स लिखने हैं जैसे आप क्वेश्चन नंबर 13 में लिख रहे थे. एंड नाउ क्वेश्चन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यह है कि डिजिट्स, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जो एक दूसरे के, जिसमें ये वाला ना रिवर्स करने पे जो डिजिट बन रहा है वो इसका फैक्टर भी होना चाहिए और इसके डिजिट इसके उल्टे भी होने चाहिए. सो दीज आर द ओनली 2 केसेस पॉसिबल, राइट? सो इसमें ABCD का वैल्यू पूछा है तो 9 + 8 + 1 आंसर वुड बी 18 गाइस. ओके, एक एडिशनल क्वेश्चन हमने कर लिया बिकॉज कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है. गुड शुभ. अब do this question number 15 now. How many natural number less than 500 will not have 2n number of factors where n is a natural number? क्या आंसर आएगा बच्चों? What should be the right answer? Anybody? थोड़ा नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बच्चों. यस, इसका आंसर आपको सेकंड्स में आ जाना चाहिए. गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको आता है कि नहीं? राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो पढ़ा होगा, बेसिक्स तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के आने चाहिए. If I take a number n as p1 power a multiplied by p2 power b multiplied by p3 power c. Guys, what are the number of factors of this value? इस numbers के कितने number of factors बनेंगे? Number of factors would be how much? A plus 1 into b plus 1 into c plus 1. These are the number of factors of the number. Everybody know that? मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है और वो डेरिवेशन सबको आने चाहिए. रटा हुआ फॉर्मूला, दैट मींस आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स में कुछ नहीं आता है. ओके, सो गाइस, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये होते हैं, राइट? So guys, every time I'm taking a number which is a perfect square, इस जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ते हो तो आप एक चीज हमेशा पढ़ते हो कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसमें नंबर्स की पावर हमेशा इवन होती है, राइट? तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसकी पावर जो भी इवन पावर है +1. So guys, perfect square and even +1 will always give you an odd number. Yes or no? अगर कोई और भी नंबर की, प्राइम नंबर की पावर इवन होगी तो वो भी ऑड ब्रैकेट बनेगी. ऑड इनटू ऑड विल अगेन गिव यू द ऑड नंबर. इवन ऑड हम अभी करके आए हैं. तो इस परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके कभी भी इवन फैक्टर्स नहीं होते. परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर जो होंगे वो हमेशा ऑड ही होंगे. डू यू एग्री विद दिस? अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, आप 16 को ले लो, 2 का पावर 4. At this number has how many factors? ये number 5 factors है इस number के, right? This is a perfect square. Take another number 144. 144 is 2 का power 4 into 3 का power 2. इसके number of factors कितने हैं? 5 into 3, 15 factors, right? A perfect square will always have an odd number of factors. That's so basic and everybody who has studied the number system should know this. अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स का चैप्टर करने के बाद अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि नंबर ऑफ फैक्ट या कि परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्यों होते हैं, रीजन पता नहीं है अगर, तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर करना बेकार हुआ अभी तक. आपको दोबारा से करने की जरूरत है और थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में करने की जरूरत है, राइट?
How many natural number less than 500 will not have 2n number of factors? So guys, perfect square will always have odd number of factors, right? So question में बोला कि कितने ऐसे numbers हैं that will not have 2n number of factors. 2n number of factors का मतलब क्या हो गया कि number के even factors. Yes or no? Got it? अगर 2n means 2n should be the number of factors and that has to be an even number, right? तो even factors we know that 2n factors नहीं होने चाहिए, will not have 2n number of factors. That means मेरे को वो numbers find out करने हैं जिसके odd factors होने चाहिए. And we know that odd factors किसके होते हैं? Odd factors means only perfect square numbers. जो number perfect square होगा उसके ही odd factors होंगे. Tell me guys, जो number perfect square नहीं है क्या उसके odd factors हो सकते हैं? अगर कोई number perfect square नहीं होगा तो उसमें prime number की power odd होगी, जैसे 3 या into p to power 5. अगर एक भी पावर प्राइम की इवन आती है तो जब आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालोगे तो 3 में 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करते ही नंबर इवन बनेगा. तो इवन into something the number of factors is always be even, right? So a number that is not a perfect square will always have even factor. Is this statement true or false? Tell me guys. A number which is not a perfect square will always have an even factor. Is this statement true or false? True or false? Come on, tell me. Numbers which is not a perfect square will always have even number of factors. That's a true statement because अगर perfect square नहीं है तो प्राइम नंबर की किसी ना किसी प्राइम नंबर की पावर ओड है तो जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो उस पावर में 1 ऐड होगा, पावर में 1 ओड में 1 ऐड होगा तो नंबर मल्टीप्लिकेशन में इवन आएगा. तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते टाइम एक ब्रैकेट इवन है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डेफिनेटली इवन होंगे, राइट? नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स विल ऑलवेज हैव इवन फैक्टर्स. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Numbers which are perfect squares will always have odd factors, will always have odd factors. That's also true. Okay, it's true except the number 1. Except the number 1. 1 is a perfect square but 1 का एक ही factor है 1. Yes or no? हाँ, but वो भी odd है, right? तो हाँ, perfect square के odd factors होते हैं. Yes, 1 के भी odd है तो हाँ सही है. तो 1 का exception नहीं है, right? Sorry. So guys, अभी मुझे क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 500 से नीचे हैं और जिन which does not have 2n number of factors. इसके 2n number of factors नहीं होने चाहिए. 2n नहीं होने चाहिए मतलब odd होने चाहिए. odd होने चाहिए मतलब नंबर perfect square होना चाहिए. तो 500 से छोटे नंबर जो कि perfect squares हैं वो कौन से होंगे? 1 से लेके 22 तक, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, राइट? एंड अप टू 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529. सो स्क्वायर्स याद रखना कितना जरूरी है आपको यहां से पता लगना चाहिए, राइट? सो यस, देयर विल बी टोटल 1 to 22. These are the only perfect squares that we have. Yes or no? 500 से नीचे, these are the only perfect squares we have. Everybody clear with this? So 1 से 22 कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनके 2n नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होंगे, 2n नहीं मतलब odd होंगे, तो आंसर विल बी 22 everyone. Clear हो गया? Are you guys with me? Is this question clear? That's it for the day, guys. We have done 5 more questions on perfect squares. Tomorrow I'll be picking a new topic and कल हम co-prime के questions पे discussion करेंगे. एक और questions मैंने आपको prime number बीच में अभी पहले ही एपिसोड में करवाया था. प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट पे आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन एज अ होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 16 ये कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. आई वांट यू टू टेक इट एज अ होमवर्क एंड गिव इट अ ट्राई गाइस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन एंड this is a contact number guys where you can call and book your mentorship and counseling session, right? Any doubts that you have for your CAT exam preparation, आपका preparation से related कोई भी doubt है, कहाँ से prepare करना है, क्या material पढ़ना है, any doubts that you have, you guys can call at this number and you can book your counseling slot with me, right? Thank you so much for joining the session. Please share it with all of your friends guys and be regular with the sessions. Look at the number of sessions, students who are live at this moment. Is this why I'm taking live sessions for you? This cannot happen, okay? If you will not be serious, I will not be able to continue with the series guys. Let me honestly tell you this, right? If this is going to be the participation, I'm sorry. I'm really sorry.
I might close the series anytime I want. Okay. Okay. Thank you so much for joining the session, guys. Please share and subscribe to the channel for updates. Thank you.